So, okay, good morning, guys. Today is Saturday. The market is closed and छुट्टी है मेरी, तो इसके वजह से मार्केट क्लोज है तो हमें बहुत सारा काम करना है. वी हैव टू जर्नलाइज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ट्स, अंडरस्टैंड द इकोनॉमी. तो दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आज का काफ़ी काम करना है. सो आई विल गिव यू बोथ प्राइस एक्शन एनालिसिस एज वेल एज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट आर माय फ्यूचर प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट वीक. क्योंकि मेरा पिछला वीक बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, सो आई एक्सपेक्ट कि जो नया वीक आएगा इसमें बहुत ही प्रिसाइसिव ट्रेड्स लूँ और सिर्फ वो ट्रेड्स लूँ जो प्रॉफिटेबल हों, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी पोजीशंस लूँ और किसी पे ना जाऊँ. एंड आई विल शो यू दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट फॉर द वीक एंड व्हाट द इकोनॉमी लुक्स लाइक करेंटली फॉर गोल्ड. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, I will just first journalize and then I'll give you the fundamental analysis. Then I'm gonna read. Then we'll look at the price action analysis. Then I'll journalize once again and we'll continue for the day. And yep, this is it. And be in the video. आज की वीडियो लंबी होने वाली है and of course I'm going to tell you three important things at the end of the video that is going to help you extremely बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेंगे. अगर आपने वो चीज़ तीन इम्प्लीमेंट कर ली तो आप 10x कर देंगे अपनी ग्रोथ को इस चीज़ में, विच आई हैव एक्सपीरियंस. So yes, I'm gonna just tell you that, and yeah, now without any just without wasting any time, I'll just start my generalizing for the day now, and after that I'm gonna give you the fundamental analysis. And yes, let's go to generalizing. So guys, just like that I have just completed my journalizing up and our market close है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता as you all know. So अब मैं directly we are going to get on the fundamental analysis for the next week कि अगले क्या reads हैं, क्या expectations हैं, क्या economical analysis है अभी का. That is going to be a very important part. After that I'm gonna read my book and then we are gonna start talking about the technical analysis and what my mistake was for the last week. सीख सकते हैं इससे and I'll tell you how to journalize your things also. So without wasting any time, now let's get on to the fundamental analysis. Guys, now let us talk about the economical analysis for the next week. So अभी मैं आपके previous week पे लेके जाता हूँ. That was from 28 from the 28th of 1st of August. So yes, as you can see, this was Monday 28. We didn't have any of the reads, and we can now see at Delhi 29th June we had a very हमारा बहुत important read थी, which was the Jolt's job opening, which is a very important read. एंड ये हमें ओवरऑल लेबर मार्केट डेटा की वजह से बताता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है कैसे नहीं बढ़ रही. सो इट केम डाउन 7.44 and it was expected of 7.51. So this I'll say that this is a big drop, which इसकी वजह से हमारा जो हमारा डॉलर है वो बहुत डाउन चला गया था बिकॉज ये इकोनॉमी फॉलिंग सिग्नल है और इसी से गोल्ड काफ़ी अच्छा गया था. सो अब दिस वॉज अ बुलिश सिग्नल फॉर गोल्ड. हेयर गोल्ड अपना बुलिश मूव कर रहा था. देन ऑन द नेक्स्ट डे व्हाट वी सी इज दैट एज यू कैन सी हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज कम आई हैं जिसकी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से ज़्यादा. फेडरल फंड रेट हमारा 4.2 to 4.5 ही है. बट वॉट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द ADP एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड द एडवांस GDP नंबर विच इज एडवांस GDP नंबर द लास्ट टाइम जब ये था तब ये ड्रॉप हुआ था जिसकी वजह से गोल्ड ने सिग्निफिकेंट बुलिश मूव करा था. बट दिस टाइम दीज बोथ हैज़ इंक्रीज बाय सिग्निफिकेंट मार्जिन. एज यू कैन सी ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है हमारा वो 104 क्या है एंड it increased to a 0.5%, which is a very good and increasing signal for डॉलर. इन्हीं रीड्स की वजह से डॉलर ने अपनी एक बुलिश रैली शुरू कर दी थी जो कि हर एक बंदा भी बता रहा होगा आपको. जो अभी डॉलर ने इतने टाइम बाद एक हीलिंग जो रैली स्टार्ट करी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीड्स ओनली. सो ये दिस वॉज Wednesday July 30. Now on July 31st we have the FOMC conference in which tariffs के बारे में बात हुई. We do not have any much of the significant reason, but what we can see that on these days, as you can see there from all of the PCE, that is the personal consumption expenditure, and the unemployment claims, each and every read of it increased in a significant amount, जो कि हमारा another signal है कि जो economy है वो हमारी gain कर रही है, that is healing up, which is one time more a good signal for stocks as well as for the US dollar, but a very bearish signal for gold, जिसकी वजह से gold का चार्ट काफ़ी अनसर्टेनिटी दिखा रहा था and due to which I lost my positions. और now if we talk about the Friday,
replaced the August one, that was the recent Friday. And we, ये हमारा काफ़ी अच्छा हमारा था week. And what we can see that the average or earnings was similar of that what we expected, but the non-farm employment change, हमारा जो ADP था, जो कि हमारा ऑटो डेटा प्रोसेसिंग होता है, वो हमारा डाउन आया, वो हमारा अप आया, बट द ADP जो हमारा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो हमारा एग्जैक्टली जितना हमारा अच्छा आया था उतना ही बुरा आ गया, सो दैट न्यूट्रलाइज्ड अकॉर्डिंग टू मी. ऑल्सो द ISM manufacturing PMIs are falling in a decent momentum, dropped by 1.5%. अगर ये 50 से नीचे होता है, that means the economy is declining, और the manufacturing sector of the economy is going to downside, which is once again a bullish signal for gold. So आपने इन सबको देखते ही ये बात जान ली होगी कि as you can clearly see हमारे कुछ रीड्स बुलिश हैं gold के लिए and कुछ REITs extremely bearish, and that is why I prefer that the momentum of the price that we are currently in is neutral for gold. Gold neutral है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ मेरे पास एक specified bias नहीं है. But okay, so now what we can do only is that we are dependent on the next week. Today is Sunday, as you can see, and the next week goes from 4 to all the way to 8 of these days, or these 5 days, because I believe इन्हीं 5 days में हमें अगर इकोनॉमिकल कंफर्मेशन, अगर हमें टेक्निकल कंफर्मेशन मिलती है, then we can look for much better signals. So yeah, without wasting any time, let me just tell you about the next week. So on Monday, we do not have any of the significant week. We have the Swiss CPIMM, which is we do not have much impact on the XAUSD. That is the pair that we trade. Also on August 5, वी हैव द ISM सर्विसेज PMI. सो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग PMIs हैं वो हमारी ड्रॉप आई, एंड इफ दिस रीड कम्स इन डाउन, दैट माई बायस फॉर गोल्ड विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूट्रल टू बुलिश, क्योंकि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन चल ही रहा है. अगर सर्विस सेक्टर भी डाउन हो गया, देन इट वुड बी ऑफ कोर्स और नॉट a good signal for the economy, not for the US dollar. So I depend on August 5 read, and yep, the next week हमारा थोड़ा लो वर्ड लेने वाला है, क्योंकि हमारी ज़्यादा नहीं है. क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज came in bad last time, but I believe that they are going to improve this time, because there are some measures that are taking on in the FOMC meetings. Also we have the unemployment claims. If they drop also, then my अगर ये भी मैं I believe कि अगर ISM सर्विसेज हमारे नीचे आई, तो unemployment claims भी I believe नीचे ही आएंगे. और अगर ये हुआ तो of course I will be confirming that the bias of gold will be now shifted to bull, and it could probably take out the all-time highs if we just involve in these kind of activities. And on 8th of August we do not have anything, but we have the Canadian employment change, and employment we do not have much impact on the XAUSD. So this is it. So what I want to say basically is that my bias currently for gold is bearish. Sorry. My bias for gold currently is neutral, and I do not have any confirmation that price is going to upside or downside, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो न्यूट्रल है. also gold के लिए कुछ प्रॉपर सिग्नल्स नहीं है. some things are good, some things are bad. So yeah, I'll be looking for a strong confirmation. I will be looking for a technical confirmation if I'm going to take a trade. And what we can do is, okay, so now we just go on to the technical analysis. ओके, सो यस, दिस इज़ इट. मैंने बताया ये फंडामेंटल एनालिसिस थी हमारी. सो अभी जो हमारी इस वीक की जो रीड्स हैं, हम हाईली डिपेंडेंट ऑन दैट. उसको पता लगा कि प्राइस कहाँ जाएगा. मेरे पास कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है. एवरीवन सजेस्टिंग टू ट्रेड एनी अदर एसेट, बट आई कैन नॉट, बिकॉज आई जस्ट स्टिक टू ओनली वन एसेट. व्हाट आई हैव टू डू फॉर द अपकमिंग 5 years. For the rest of my life, I'm just going to trade one asset, that is the XAUSD or the gold spot US dollar. That is what that is in which I have my mastery in. That is what I'm going to trade for the rest of my life only. I think कि मैं NASDAQ में भी थोड़ा सा करूँ, but अभी I am just looking until I get funded and make good amounts of money. Till then I'm going to trade just one asset, that is XAUSD. I will look in I will look getting into indices after a long time, not not in the recent times. But तो अभी क्या करेंगे हम just so the मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे दी. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रीड, देन वी आर गोइंग टू जर्नलाइज, देन वी आर गोइंग टू डू अवर टेक्निकल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड व्हाट कुड द प्रोबेबल रीजंस. एंड दिस इज इट. सो वी आर वेस्टिंग एन टाइम. लेट मी जस्ट रीड बुक.
Okay, my reading for my first reading is now complete. I read the 11th law of the 48 laws of power today, and now what we are going to do is I'm going to journalize. Then we'll move on to the technical analysis. Then I'm gonna do some work. I'm gonna complete my work. Then we are gonna read once again. Then I'm going to tell you some important things, and then we are just going to end our day. This is it. So without wasting any time, let us just start journalizing. They don't never see me coming. If I'm honest, kinda love it. On something, tell your uncle, sister, cousin, though whoever listens. It's getting hard to bottle in the town and find a balance in the front. Throwing bows, it's the downs, try to follow me. Me, I tend to jump when it's out of reach. I at least take a step. ओके गाइस, नाउ आफ्टर माई जर्नलाइजिंग मैंने जर्नलाइजिंग की एक छोटी सी क्लिप डाल दी है. आई एम स्टिल जर्नलाइजिंग. इट इज़ 11:30 इन द नाइट नाउ, एंड अभी थोड़ा सा काम रह गया, सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट. एंड आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आई एम गोइंग टू गिव यू द टेक्निकल एनालिसिस दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट for the next week, and what how do I take entry in the next week, upcoming week. And yep, after that we are going to end our video. This is my life. I just work and think of my dreams. There's nothing, I do not want to go out, I do not want to roam, I do not want to explore new things until I become rich, until I start making good amount of money so that I can travel on my own. एंड ये अभी मेरे यहाँ पे पेंट की वजह से मेरे ये पोस्टर्स हट गए थे, एंड नाउ आई हैव री posted them. They gave me energy, as you can clearly see, and they motivate me. So yes, now I'm going to journalize until जब तक ये complete नहीं होता, and then I'm then going to give you the technical analysis, and yep, this is it, and let's see what happens. Okay, so guys, now let's talk about the technical analysis for this position for the upcoming week. So what we can see that I have marked out the important liquidity levels at ये मैंने VPOC से mark करे हैं, that is the volume profile analysis, जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, and I expect the price will definitely respect out these levels. So yep, let me just clear these all. So yep, what we can clearly see is that price has a very huge impulse on 1st of August, जो कि हमें पता है, जहाँ पे हमारी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था, जो कि हमारी काफ़ी डाउन आई थी, जितनी फर्स्ट वीक में आ पाई थी, उसकी वजह से हमें एक सिग्निफिकेंट मूव दिखा. Also the price has not cleared this imbalance currently, and I expected the price to come back down, and I took a position just right here in this part. The price went down a little, but मेरा जो take profit mark था वो ये था, because at this level, this is a very important level. Let me just tell you, let me just show you at the 5-minute time frame. Okay, so what I want to show you is that this level is a very important consolidation state, because as we can clearly see that this level has both Asian liquidity. uh, we have the London and the New York liquidity, we have the Asian liquidity or the Tokyo liquidity, and we once again had the Asian liquidity, from which we had the distribution. So as you can see, we have the accumulation, we have the manipulation, and we have the distribute so sorry, we had the accumulation, we had the manipulation, and then we had the distribution. So yep, I missed the entry from this right here to all the way down here. मैंने एक्सपेक्ट करा था कि प्राइस विल पोस्ट वाली ब्रेक दिस आउट लेवल, बट प्राइस ने नहीं करा. Price broke this level out on this move, as we all know. Let me just take it back to the higher time frame. So yeah, each and everything depends upon this this ISM service PMI. This will tell us that where the economy is growing, क्योंकि हमें पता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारा डाउन जा रहा है USD के लिए, which is extremely bullish for gold. But what I expect in the recent times, एज यू कैन सी, ये गोल्ड का बिल्कुल भी एक अच्छा मूव नहीं है, जो कि मैं ऐसा मूव मैं कभी गोल्ड से प्रिडिक्ट नहीं करता. बट ये एज यू कैन सी कि गोल्ड कितनी बुरी तरीके से आजकल नीचे गिर रहा है. एंड सो व्हाट आई वांट टू सी इज दैट प्राइस विल, accordingly to me, price will just respect this important level, that is the 3374 375 level, and will go all the way down towards checking this imbalance at here.
at 333 level, because this imbalance need to definitely be cleared out, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी good amount of liquidity है जो कि अब तक clear नहीं हुई है. So one of my biases, I expect the price to move to the upside toward this 3375 range, and then will fall down all the way to the 333 range. And my bias is currently neutral, and this is what totally on the basis of price action analysis. So we can also see अगर IMS से समय से PMI down आती है, then we could see a rally towards to the upside, or we can see a downward move to downside. But what I expect before the rally is that price will come up at this level, will check out this imbalance, and will move to the downside in order to check this imbalance out, and then will move to the upside. This is where we are going to take the first position of the week, and yep, let's see what happens. Okay, so guys, now it is 12:30 in the night, and अब मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, बट अब मैं काफ़ी थकान होगी कि सुबह से कर रहा हूँ. एंड नाउ वी आर गोना जस्ट स्लीप. एंड व्हाट आई वांट टू से इज दैट मुझे भी अंडरस्टैंड कि कभी भी ऐसा नहीं लगता कि you have fulfilled, you have done the right thing, you have completed your work. At the night you could have done more, but trust me, daily efforts are the key to success. भले ही ऐसा ना लगे कि आज तुमने तमीज़ से नहीं करा, but do it, do something. At least you have done something that 99% of the people are not doing, and you are doing great. You are doing great. We all one day are going to make it. Just be consistent, stay resilient, follow your dreams, manifest. Just see your dreams daily, what you want to achieve, and you'll achieve it. That is it for the day, guys, and yes, I'll see you tomorrow.